In this episode of The Rise of North Bhubaneswar, we bring to you one of the most important policymakers and contributors to the city's urban growth. Former Chief Secretary to the Government of Odisha, Shri Asit Tripathi. We speak to him about Bhubaneswar's transformation, its urban journey, and the vision that has shaped the city we see today. सर नमस्कार नमस्कार सर मोर आपन को किछि किछि छोट प्रश्न रहियो बट बड़ क्यूरियोसिटी अछि आम टाइम रे बाप मांकर आम मानकर प्रथम चॉइस थिला गोटे ब्यूरोक्रेट मो पु गोटे ब्यूरोक्रेट हम कहीं सेटा मन रे थाई कोन ब्यूरोक्रेसी इज दैट आपन तो ब्यूरोक्रेसी रे एंड टू एंड रहिले व्हाट इज दैट क्रेज नो ब्यूरोक्रेट हबा गोटे ब्यूरोक्रेट हवा पई क्रेज आगुरु बेसी थिला आई विल एडमिट दैट पार्टली बिकॉज ब्यूरोक्रेट मानकर गोटे सोशल स्टैंडिंग वेरी हाई थिला प्राइवेट सेक्टर बेसी डेवलप करना थिले सेते बेले तेणु प्राइवेट सेक्टर रे सक्सेसफुल लोक मानकर गोटे एग्जांपल हिसाब रे कम थिला तो पीपल वर नॉट वेरी इंस्पायर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एबे इंडिया इज अ डिफरेंट प्लेस इंडिया रे अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई जो कन्वेंशनल जॉब्स थिला ब्यूरोक्रेट से ले कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स ता छड़ा एबे बहुत वेराइटी रो जॉब्स वर्तमान अच्छी एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहार जो विषय रे इच्छा अच्छी एवं इंटरेस्ट अच्छी बा हॉबी भलिया अच्छी सेठी मध्य जॉब अच्छी तेणु वन कैन परस्यू वन्स पैशन एज ए प्रोफेशन एंड it can be remunerative if you are good at it. But in our times, in the 70s or 80s, the opportunities were few. You know, I agree with you. Then, bhalo student mane almost single-mindedly UPSC douthule. Having said that, even today there is a great desire amongst youth in the country to become civil servant, and especially IAS or other central services or all India services. The evidence is that UPSC is still considered to be one of the toughest exam in the world, not India, in the world. इन द वर्ल्ड In the world. माने the number of people appearing and the success rate नहीं की यदि compare करा जाए UPSC exam is considered to be one of the toughest, including if you compare them with jobs in the developed countries, this is the toughest job. So this is an evidence that even today people are interested. And why people are interested is this, that even today IAS continues to be a very challenging and interesting career. I'll give you some reasons for that. IAS, if you join, you start with leadership position from your first day. You become the head of the subdivision, sub-collector. You become the head of the district, collector. Then you potentially become a director, which is head of a directorate, head of a department, secretary, and so on and so forth. So, ei bhaliya opportunity kouthi achi. Acha, then if you are an engineer, you are always an engineer. But in IAS, it's a, within quote unquote, a generalist post. Aji yadi, if you are in, let's say, agriculture department, tomorrow you could be in animal husbandry and fisheries department. Next day you could be, or next year or year after that you could be in industry. You could be some other department. So there is a lot of interesting job variations. So you cannot get bored. I said generalists, but today if you see, lot of professionals have come into IAS, and the policies in Government of India's cadre management also has changed. They are encouraging people to continue to be in jobs which are suitable to them and professionalize. So, jane officer finance re bahut din achanti ebang they are considered to be expert in that finance. I, for example, have always worked in industry, mostly worked in industry. Mo sub-collector thili Talcher re, Jajpur re. I have seen Jajpur Road, Kalinganagar from the earliest days. Talcher land acquire kolu, NTPC land acquire korthulu. As you know, Talcher today, and in my time also was an industrial area. I was ADM Raurkela for 3 years. The only actually Bhubaneswar ko, so more director tourism and culture
रे आरंभ कली मोर भुवनेश्वर जर्नी आफ्टर 10 years इन सर्विस तापर मु एमडी इटको फॉर 4 years रही आई वाज एनर्जी सेक्रेटरी देन आई डिड एन एमबीए इन यूरोप फॉर a year देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गली 7 वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रही which is again industry experience. I was chairman of APEDA for 3 to 4 years during those 7 years. Then signed a lot of FTAs during my time. आमर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सो मोर बहुत इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अच्छी सो मो कहवा कथा है जी इवन टुडे आमर सर्विस रे दी सीनियर ऑफिसर्स फाइंड दैट तार कोथरे इंटरेस्ट अच्छी एंड आई एम श्योर व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विथ ऑफिसर्स यू कैन सी दे ये टूरिज्म रे बेसी इंटरेस्टेड टूरिज्म रे रहिले मु टूरिज्म सेक्रेटरी 2 थर रहिली आज्ञा सो दीज आर ऑल इंडस्ट्री यू नो एरिया. Sir, your journey from sub-collector to chief secretary, your experience, challenges, as a kind of satisfaction, some kind of exciting stories, jota ki apankar मन पड़ुथबो कि and all that, if you can share it to us. मोर एडीएम राउरकेला थिला बेलू आई हैड ए वेरी यू नो प्रोडक्टिव टाइम आमे राउरकेला स्टील प्लांट 50s रे कनसीव हला एवं विथ जर्मन गवर्नमेंट हेल्प राउरकेला स्टील प्लांट तैयारी हला बाय एक्वायरिंग क्लोज टू 30,000 acres of land in a very backward mostly tribal area एवं स्टील प्लांट वाज डेवलप्ड मु जेतेबेले 1990 रे जॉइन कली एडीएम राउरकेला इवन इन 1990 देयर वाज ए ह्यूज आउटक्राई दैट आमर लैंड हाउसेज मानकू भल भाव रिहाबिलिटेशन करा हेनी एवं कंपेनसेशन दिया हेनी सो 1990s रे मु 3 वर्ष रही सो टू थिंग विच हैपेंड वाज वेरी मेमोरेबल टू मी इवन टुडे आमे राउरकेला स्टील प्लांट रो जो टोटल लैंड यूटिलाइजेशन टाको मैप कलु एवं राउरकेला स्टील प्लांट एंड ओडिशा गवर्नमेंट हैड नॉट साइंड द लीज एग्रीमेंट टिल देन तो राउरकेला स्टील प्लांट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी they were not kind of responding to the local needs, especially the employment request from the land housee and their successors. Move with the help of the then revenue minister, tanker of direct blessings ray plus the other senior officers, Mr. Surendra Naik thele revenue minister. Acha. Move I and my team, we almost forced Raurkela Steel Plant to sign the land agreement with us, and we found out they had massive surplus land which they were not utilizing. सेतेबेलू स्टील प्लांट रो केते लैंड दरकार से भाया स्टडीज हो नथिला गोटे स्टील प्लांट माने बहुत बड़ कथा गोटे होतला तेणु तांकर टाउनशिप वाज लैविशली डन दे वर ओनली a 1.4 million ton steel plant then and now I think they are less than 4 million and as you know Angul रे 2000 acres रे 12 million steel plant ही सारी तेणु लैंड यूटिलाइजेशन सेतेबेलू बहुत साइंटिफिकली हो नथिला सो सेतेबेले हम एग्रीमेंट साइन कलु सेतेबेले जो सरप्लस लैंड बाहरला दे सरेंडर्ड दोज लैंड सेथरे छेंड कॉलोनी डेवलप कला एज यू नो राउरकेला छेंड कॉलोनी इज ए नाउ provides employment to not the housing to a large number of people. Okay. राउरकेला स्टील टाउनशिप छड़ा लैंड नथिला सिविल टाउनशिप थिला खाली Right, right. छेंड डेवलप कर हला से जो लैंड सरेंडर कला राउरकेला स्टील That's a private township. नाउ दैट्स ए सिविल टाउनशिप माने That's a civil township. सिविल टाउनशिप तो जो माने राउरकेला स्टील प्लांट रिटायर कले किंबा राउरकेला को आसिले अन्य प्रोफेशन रे बा इंडस्ट्री कले राउरकेला स्टील प्लांट को सप्लाई करिया पई बा अन्य पर्पस पई तांग पई हाउसिंग नथिला तो छेंड हैज इमर्ज्ड एज ए हाउसिंग मैसिव हाउसिंग कॉलोनी बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटी एंड प्लस प्राय 1,500 लोक को चाकरी दिया गला बिकॉज दैट वाज द होल पैकेज एग्रीमेंट साइन हबो सबु सेटल हबो एम्प्लॉयमेंट दिया जिवो एवं लैंड सरेंडर हबो सो इट वाज ए वेरी वेरी सक्सेसफुल endeavor during that time. Secondly, we carried out the literacy campaign and I was the chairman of the Raurkela city campaign. से तो एर्नाकुलम रे केरल रे आरंभ होइतिला NLM नेशनल लिटरेसी मिशन होइतिला एवं सारा कंट्री रे विभिन्न जगह रे होतिला तो राउरकेला वाज इंडियाज फर्स्ट अर्बन बेस्ड
literacy campaign. As MD IDCO, I was very, again another, you can say a success. ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର had all the ingredients to attract a large number of IT industries. IT, ITES, ସେତେବେଳକୁ India's IT and ITES potentiality was known to the world, and Bangalore was the focal point. Hyderabad, because of the visionary work of Mr. Naidu, the then Chief Minister, Microsoft development center आरंभ होइतिला, हाईटेक सिटी बोली गोटे बड़ा प्रोजेक्ट से मैंने डेवलप करथिले, एवं we were very inspired that Bhubaneswar also should attract industries, but there was no place जोठी से मैंने एस्पेरियो सबू जो बहुत मॉडर्न सेंटर माने बैंगलोर और हैदराबाद रे से तो को हे सारी थिलानी, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस एंड मेनी अदर कंपनीज. आमे गोटे चैलेंज हिसाब रे एठी गोटे आईटी पार्क करिया पई आरंभ करलु एवं इन्फोसिटी तयारी हला से समय रे 99 रु इट वाज स्टार्टेड. 2002 रे प्रमोद महाजन एवं श्री आम दी देन चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनागुरेट करले ताकू. आउ सेठी इन्फोसिस इफ यू रिकॉल 97 रे आसीथिला ओडिसा को. ओकाक रे से माने गोटे 70 सीटर ऑफिस करथिले. मु तांकू पर्सनली 25 एकर्स बिकिली इन्फोसिटर फर्स्ट क्लाइंट एवं 25 एकर्स तांकू रिजर्व कर दिया गला और 30 एकर्स दिया गला विप्रो को. एवं ता परे परे सब्सिक्वेंटली लॉट ऑफ आईटी कंपनीज केम, लोकल यंग पीपल लोक मैंने मध्य आईटी सेंटर डेवलप कले. सो इन्फोसिटी जो से पटे जो हैला नॉर्थ भुवनेश्वर रे, आई वुड से इट बिकम एन इकोनॉमिक इंजिन ऑफ दैट एरिया. एवं जयदेव विहार परे टुवर्ड्स नंदनकानन जो ओनली टिके सम हाउसिंग खाली जो होइथिला, या फल इकोनॉमिक एक्टिविटी रो बढ़िला. मु जानी जे नास्कॉम रो स्टडीज यू मस्ट बी नोइंग फॉर वन आईटी जॉब इट क्रिएट्स 4 इनडायरेक्ट जॉब्स. तो बर्तमान जदि सेठी प्राय 40-50 हजार इंजीनियर्स काम करुचंती, यू कैन मल्टीप्लाई योरसेल्फ एंड सी व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन ऑल अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स. टूरिज्म रे, ट्रांसपोर्टेशन रे, हाउसिंग रे, रिटेल रे, रिक्रिएशन रे, फूड एंड बेवरेज रे केते सेठी अपॉर्चुनिटीज हे गेलानी. तेणु भुवनेश्वर it is very appropriate that you are doing a podcast on North Bhubaneswar. I think one of the most important factors behind the success of North Bhubaneswar is an extension of Bhubaneswar, yet the most modern part of Bhubaneswar is behind because of Infocity to most extent. सर बढ़िया लगे आपंकर जोटा कहले ता भीतर मु किछ पॉइंट गुडा कैप्चर करली. लाइक नो एवरी टाइम गोटे एडमिनिस्ट्रेटर पे गोटे स्ट्रॉन्ग इंटेंट इज एसेंशियल. लाइक योर स्टोरी इन योर स्टोरी शेयरिंग इन राउरकेला, द ट्रांसफॉर्मेशंस यू इमेजिन यू डिलीवर. देन आपण आसिले इडको को द ट्रांसफॉर्मेशंस you imagine and you deliver. And the component what I could find, one is land consolidations, land planning, land utilizations, then land to employment visionary, employment to city development visionary, then all these things impact North Bhubaneswar till time into this stage जोटा मु देखुची. तो सेति गोटे विजन, गोटे इंटेंट, गोटे प्रॉपर प्लानिंग ए सब जिनस गुड़ाक दरकार बोली मु भावे. एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए प्लानर आपण कौन भाविकी इडको जितेबाला आपण चेयरमैन थिले सेठू आपनकर जो नॉर्थ भुवनेश्वर रो बिंधाणी बोली कहा जाए, द आर्किटेक्ट बिहाइंड नॉर्थ भुवनेश्वर ग्रोथ बोली कहा जाए. टू मी व्हाट आई फील दैट इज मिस्टर त्रिपाठी. एंड सेठू आपण जो विजन टा आरंभ करथिले, आपन को विजन सेतबेल जेतबेल आरंभ करथिले, व्हाट वाज योर विजन एज ए इडको चेयरमैन फॉर नॉर्थ भुवनेश्वर? No, let me clarify that I was MD IDCO. Oh, sorry, MD, okay. Right. You see, Bhubaneswar is actually, in my view, 3 cities now. One is the heritage city, which is a very, very old city, and potentially a UNESCO World Heritage Monument. जो भलिया हमारा heritage और history अच्छी old city, that area cannot grow. Then the हमारा जो Odisha post independent Bhubaneswar, the units land township,
या छड़ा आमर हाउसिंग एवं सिटी अन्य अम्यूनिटीज जगह कहीं बियॉन्ड जयदेव विहार परे अप टू नंदनकानन वी हैड लॉट ऑफ लैंड अनफॉर्चुनेटली देवर मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट किसम लैंड इन विच हमारा जो XIMB फॉर्चून टावर विच अगेन आई वाज एसोसिएटेड एज यू नो Mayfair and lot of other places come but तार अभी फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन चेंज है but beyond that and Salasiri Bihar pare only Chandaka industrial estate was available Rasulgarh industrial estate Mancheswar industrial estate was completely saturated but forest challenge थिला city सेटा सैचुरेट हो जाइला बहुत कम चंदका रे हमर वी हैड 1000 acres of land तेणु आमर मोर naturally we look towards Chandaka industrial estate for development of industries both in manufacturing sector ITES sector and social sector आमे किछि लैंड आइडेंटिफाई कलु जोठी आमे कॉलेज एंड स्कूल्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को दबु फल यू नो यूनिवर्सिटीज लाइक किट यूनिवर्सिटी could come up भलो schools like Sai could come up because of the policy सेठी आमे 10% रिजर्व करथिलु फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस ताकू परे गवर्नमेंट बढ़ाइले सब्सिक्वेंटली बढ़ाइले आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट Bhubaneswar, if you see the landscape, is very undulating and interesting towards the north Bhubaneswar, and it merges with Cuttack. That is another advantage. And there is a lot of land between Patia area and Trisulia area, which is actually an extension of our Bhubaneswar. And the most interesting landscape for Bhubaneswar is that area. You have 3 rivers, the mighty Mahanadi, then Katjodi. कुआखाई से ये जो एरिया को जदि आम प्रॉपर प्लानिंग करवा जोनिंग करवा डेंसिफिकेशन करवा आउ भल भाव ट्रांसपोर्टेशन रोड साइंटिफिकली करिपरिबा ताहले दिस एरिया कैन बिकम द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिक्रिएशनली एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जोटा आम कहूचे ताकू आम ये एरिया बेसी दे परिबा बिकॉज ऑफ दैट इज इट्स स्टिल अ वर्जिन एरिया सो प्लानर्स हिसाब रे एज ए फॉर्मर पॉलिसी मेकर in government sector I see this opportunities in this area is tremendous and government should really concentrate on development of this area between the new Bhubaneswar and the new Cuttack which is also coming from that side around the rivers आपण से तो टू विजुअलाइज कर सकते जे भुवनेश्वर रो 15 वर्ष तळे परे स्टोरीटा कोन हबो quite possible yes because you know I am very well traveled मु वर्षे रही स्लोवेनिया रे ल्यूब्लाना रे देन मु कॉमर्स मिनिस्ट्री रहिला परे आई वाज माय टेरिटरी वाज चाइना जापान कोरिया एंड नॉर्थ एशिया सो आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इट्स क्वाइट पॉसिबल माने जे भी टिके आगु को देखिबो हमकु जाना पड़िबो जे नॉर्थ भुवनेश्वर इज एन एरिया ऑफ आई विल नॉट से फ्यूचर आई विल से प्रेजेंट नेक्स्ट 5 to 10 years रे भुवनेश्वर stature as a good tier 2 city in India can be reinforced if we concentrate with the world's best practices in zoning and town planning in this area, not Bhubaneswar. With your experience and all that, because you know you could see through the zoning, town planning, experience, you know, the growth story and all that. And you feel you maybe the land parcel are still available till Trisulia and all that से पाखापाखि भी लैंड पार्सल्स भी अच्छी एंड भुवनेश्वर ए सब जिनस इंडस्ट्रियल पार्क आसीगला स्कूल्स आसीगला कॉलेजेस आसीगला हॉस्पिटल्स आसीगला एंड आपनकर rather one thing I'm missing that you know you also created a golf club there and you are the initiator of a golf club there you know मु एमडी इट को थला बळकू से लैंड दिया हेतला मु देथली टू द golf club then and some of the then founder president of and secretary से माने golf develop कले से आम बर्तमान जाऊँ ये तलू यहाँ है होल नंबर 1 होल नंबर 1 ये जो तले फ्लैगटा नहीं सर यहाँ हूँ कि हैंडिके इंडेक्स 5 ये तुम बुझीपर गोटे दिन बहुत होगा फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेरी क्रुशियल शॉट
आपण मते कहतु सर ये जो 25 इयर्स भितर ये जो गोल्फ आसिला परे यार इम्पैक्ट ऑन नॉर्थ भुवनेश्वर ऊपर कौन पड़ी लोक कही आम शुणीचु डज इट रियली पुट एन इम्पैक्ट ऑन ए कॉरिडोर ग्रोथ मु आपनको कहली जे गोल्फ कोर्स गोटे मॉडर्न सिटी रो राइट सर गोटे इंडिस्पेंसेबल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर राइट सर सिटी को जो माने आसुचंती कॉर्पोरेट्स आसुचंती क्रिकेट प्लेयर्स आसुचंती हॉकी प्लेयर्स माने इंटरनेशनल प्लेयर्स माने आसुचंती गुड़ाए लोक आसुचंती वी गेट डेली रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अच्छा कि आमर ये आसुचंती को गोटे कॉर्पोरेट हाउस अडानी हला कि हिंडाल्को हला कि रिलायंस हला वन एग्जीक्यूटिव वांट्स टू प्ले सो एठी आपण अरेंजमेंट करंतु वी आर गेटिंग डेली रिक्वेस्ट कपिल देव whenever he is here in the city he comes here most Indian cricketers are good golfers जब भी एठी वन डे मैच हो they are here जते हॉकी मैच होची मोस्ट हॉकी प्लेयर्स आर हियर पोस्को पीपल आर ऑलरेडी हियर जापानीज माने कोरियन माने जते जहाँ आसुचंती एठी की जते की फॉरेन डिप्लोमेट्स आसंती दे आर हियर सो गोटे सिटी पाई दिस इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान इंडिया रो भुवनेश्वर इज दी ओनली कैपिटल सिटी जोठी की 18 होल गोल्फ कोर्स नहीं 18 होल गोल्फ कोर्स नहीं नहीं दैट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ छत्तीसगढ़ रे मध्य गोटे रायपुर रे मध्य गोटे 18 होल गोल्फ कोर्स अच्छी तेणु यू आस्ट या द्वारा कौन इम्पैक्ट पड़िला या द्वारा कौन जो इन्फोसिस आने सब आसिले विप्रो आसिले इनिशियल डेज रे इमेजिन करंतु सेते बेलकू ये माने इमीडिएटली कॉर्पोरेट मेंबर हे गेले टीसीएस विप्रो इन्फोसिस अन्य जेतिक आसिले तांको पई तांको मालिक मानक पई एटा गोटे बहुत बढ़िया रिक्रिएशनल हो गला मेंबर हेले तांको प्लेयर माने खेलले सो तांकर पाई गोटे एटा एते गोटे अट्रैक्शन भलिया बाहरला जेठु जाई परलेनी से माने एटा को मु एफडीडी को थिला बेलको एटा आईटी पार्क करा गला आईटी पार्क करा गला सर एमिति आपण देखिछंती कि अलगा जगह रे अलगा स्टेट्स रे आईटी पार्क कोठी नहीं यूनिक आईटी पार्क चारियाडे माने जोटे के बिजनेस संगे रे गोल्फ कोर्स गोल्फ रोड इनसाइड कारण मूवी तो जाईची बाहर को जो जाईची गोल्फ कोर्स लिटरली ना अवे फ्रॉम द सिटी दैट वाज माय इंटेंशन मु सेतोळ गोल्फर नथिली हां हां दैट वाज माय इंटेंशन वर्तमान भी एबे आसिले भी देखिबे लॉट ऑफ दिस आईटी एंटरप्रेन्योर्स जे माने अछंती सब एठी खेलछन बट आपण जोटा कहउथिले 18 होल रो गोल्फ कोर्स नाही एंड से माने तो चारियाडे किंतु गोटे 9 होल गोल्फ कोर्स जदी जेहेतु आमे करि देई पारिलु it itself for the time being is a great infrastructure गोटे एरिया रो प्रीमियमनेस ऊपर यार इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली गोल्फ कोर्स आईटी पार्क आउ विभिन्न वेरी वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिलिकॉन हला किट हला अन्य सब संस्था हला या द्वारा नॉर्थ भुवनेश्वर रो जो ग्रेविटीटा बढ़ीगला माने जो माने सब आगुरी भावुले शैलेश्वर बिहार रे भुवनेश्वर सरी जाउची चंद्रशेखरपुर सरी जाउची वर्तमान यार जो ओजनटा बढ़िला यार जो गुरुत्व बढ़िला भुवनेश्वर अन्य माने मध्य ये एरिया को गोटे नूतन सम्मान रे देखिले बट अनफॉर्चूनेटली आपण सेति पे आईटी पार्क तो बढ़ाई देले बट गोल्फ कोर्सटा बढ़ी परलेनी आपण 9 होल रु 18 होल से ही पड़लेनी बिकॉज़ चारि पटा एठी मध्य आईटी पार्क आईटी कंपनी मध्य करिवार दरकार थिला गोटे बैलेंस करिवार बैलेंस यस So we will play now second ball. Yes sir. सर ये लैंड कंसोलिडेशन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चैलेंजेस अपन भुवनेश्वर अनफॉर्चुनेटली इज currently facing a lot of challenges. Right. Amara Bhubaneswar even today quality of life is better than many tier 2 cities and it is nationally acknowledged. Okay. Nationally acknowledged. For reputed companies to come to Bhubaneswar with the present advantages. What is the advantage? Agru migration hotula. Anybody who is successful had to go to Bangalore or Bombay or Delhi. Ebe reverse migration hochi. People for good quality of life in Bhubaneswar want to come back. Okay. So जदि IT और ITES companies hire करिवे, एठी ecosystem गोटे develop करि गलानी. भलो स्कूल भलो हॉस्पिटल हे गलानी. हाउसिंग मध्य gated communities रे भलो quality of apartments भलो हेलानी. What are the problems? The problem is even today आमे जो रोड प्लान करथिले जो आर्टेरियल रोडटा जयदेव बिहार रु नंदनकानन प्लान करथिले एवं नाउ इट इज गोइंग टू कटक भाया
the new bridge, High Court Bridge. This road was not planned for traffic of today. When we plan a transport network, we must plan for at least 40, 50 years in advance. Many cities in India and obviously abroad, they start building the city with the transportation network in mind. So today in Bhubaneswar, because of delay in planning, we have to integrate a solution to our existing city. तापर बहुत pain points आसिगो. You know, हमारा now the journey from Jaydev Bihar to Nandankanan or Cuttack is such a problematic, especially in busy time, that it is no longer a very pleasant experience. People are comparing it with Bangalore's problem, and Bangalore is a traffic problem. People are shifting to Hyderabad. So at some point in time, this is going to impact our industry, IT and IT industry. Very quickly, we must find a solution to our road network and a mass transit system network. It could be a dedicated corridor for public buses. It could be metro network, which I think is a hot discussion now. सर कौन लागू चाहिए उनका आसुची नहीं मु जानी नहीं वर्तमान तो आसुनी किंतु it is also a fact that a metro in the current population also will face economic challenges. It is a fact that many metros in the country are not doing very well financially. Delhi Metro is probably only one metro which is doing financially all right. Densification নহলে public transportation system financially ଭଲ କରିବନି. ସେଥିପାଇଁ when I was chief secretary, we supported a modification of the regulation and we supported up to 7 FAR. Why? Because we want densification of corridors in which public transportation system could be financially viable. Right. We could have satellite township in which there could be quiet residential areas, but the commercial and the people who work in this economic sector should stay in a dense corridor, and it can support public transportation, investment in public transportation system. So Bhubaneswar, in times to come, we have to have either a metro, and metro need not be underground, which is very expensive. There are metro solutions which are overground. And Delhi also is a hybrid, they have underground, they have overground. So very soon we need to expand our roads, we should have flyovers, we should have underpasses, and that pain, because we are integrating a solution to an existing city, we have not planned for it in the past, then there will be pain point for some time, but it is inescapable now. आमको करियाको पड़िबो. There is no delaying this. Sir, with technology available, planning to implementation. Time कमी prefab गुड़ा material बाहर तैयारी होची आजकल फ्लाईओवर पाई. आगु जो 5 वर्ष 6 वर्ष लागुला we have seen. एबे मु भावुची कम समय लागिबो. Sir, with this kind of density available in North Bhubaneswar, and the demand government has created, and supply of housing directly or indirectly because of the ecosystem has created, which has come, do you feel it is adequate, or supply is more than the demand, or demand is more than the supply as far as North Bhubaneswar is concerned? Mu bhavuchi Bhubaneswar continues to be the only city in Odisha, unfortunately, जोठी की successful people of Odisha want to settle, which is an unfortunate situation. It माने Bhubaneswar, even Barampur, Sambalpur, Raurkela are successful people who want to buy residential house. So for a population which is nearly 5 crores, Right, sir. Bhubaneswar still has short supply of residential houses. Now the answer is little nuanced. Affordable housing amara टिके कम अच्छी, definitely कम अच्छी. High end product बेसी आसुची Right, sir. market को. Affordable housing मोटे बहुत short supply अच्छी. आमे हमारा जो माने support system अच्छंती, staff अच्छंती, जो माने office जो माने बहुत कम salary पाउचंती, हमारा domestic help जो माने अच्छंती, बाजू माने tertiary sector रे काम करचंती, जो माने tailor अच्छंती, washer laundry करचंती, किंबा barber shops करचंती, बा you can multiply these professions. से माने रही भी कोठी.
तांकु तो आमे 2 घंटा दूर को पठे परिवानी इट इज नॉट सस्टेनेबल दे हैव टू स्टे इन द सिटी तांको पय हमको एफोर्डेबल हाउसिंग करिया पड़िबो बेसी बेसी करिया पड़िबो एंड वी हैव टू माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज माने मध्यम अछंती क्रेडिट सॉल्यूशंस अछि किंतु डेफिनेटली एफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इन भुवनेश्वर इज वेरी वेरी शॉर्ट सप्लाई डेफिनेटली सर यस सो सर ये जो जिनसटा को रहिला बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ माने आगु को जाय करी ग्रोथ तो विजिबल अछि ए सब जिनस गुडा को सब तो हमको देखा जाउछि बट चैलेंजेस भी बहुत विजिबल अछि कि जेडा को कनेक्ट करले आई मीन वी कैन सी दी आउट बड़ा चैलेंज अछि सर प्लीज भुवनेश्वर रे फॉर्चुनेटली वी हैव सम ग्रीन पैचेस इवन टुडे ओके हमर एकाम्र कानन दा प्राय मोर देन 500 एकर्स एते बड़ ग्रीन पैच टियर 2 सिटी रे बोधे कोठी नाही एकाम्र कानन अच्छा एकाम्र कानन हां हां हम जो जेटा कि आरपीआरसी कहा जाउछ हां हां ताकू लागि छि भरतपुर सेंचुरी राइट राइट यस भरतपुर सेंचुरी 10 स्क्वायर किलोमीटर रो फॉरेस्ट एरिया सेटा मध्ये इन द हार्ट ऑफ भुवनेश्वर अछि राइट राइट यस हमर बॉटनिकल गार्डन अछि व्हिच इज ए मैसिव ग्रीन पैच जयदेव उद्यान अछि Right. खंडगिरी तळे राइट सर another I think more than 100 acres of green patch सिंधी गोटे मेडिसिनल गार्डन अछि कलिंग नगर पाखरे वेरी बिग पैच इमिति सब बड़ बड़ सब ग्रीन पैच अछि तो वो ता संगे आमे चंदका फॉरेस्ट अछि तापरे मु कहली हमर ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट अछि राइट कुआखाई तापरे हां रिवर फ्रंट अछि अपन भी ए सब इंटीग्रेट करी करी सर हमको गोटे बहुत वर्ल्ड क्लास प्लानिंग करिया पड़ियो एवं इट हैज टू वेरी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड आमे सीडीपी करिचु गोटे जोटा कि अर्ली 2000 रे हेतिला नेक्स्ट सीडीपी बोधे ड्यू राइट सर करिया पई तो सेते बेलको सीडीपी कला बेलको नॉर्थ भुवनेश्वर को गोटे स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड टाउनशिप हिसाब रे न्या जाय की ट्रीट करिकी सेती गोटे वर्ल्ड क्लास मैप करी प्लानिंग करिया कथा और से अनुसार सीडीपी डेवलप करिया कथा बर्तमान तुम पुलिंग लैंड पुलिंग आरंभ होलानी लैंड पुलिंग इज ए वेरी वेरी वाइज डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इट हैज बीन ट्राइड वेरी सक्सेसफुली इन गुजरात एंड महाराष्ट्र इतरे बिना डेरी रे और बिना कॉस्ट रे बड़ा बढ़िया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हे पारुची तो हम जंती पाइकपड़ा एरिया आमर से एरिया रे लैंड पुलिंग होची सो से भलिया लैंड पुलिंग करी इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाय परिबो भुवनेश्वर रो जो आउटर रिंग रोड टा मध्य अधा हेची ताकू कंप्लीट करा जाय परिबो दया कैनाल मध्य जो प्लान अछि ताकू करा जाय परिबो तेनु वर्तमान भुवनेश्वर रे ट्रांसपोर्टेशन आउ रोड नेटवर्क रो चैलेंज मु भावची नंबर 1 नंबर 2 थर्ड होची ताकू सस्टेनेबल ग्रोथ करिया पई हमर जो बायोस्फीयर अछि ग्रीन एरिया अछि रिवर फ्रंट अछि ताकू टाउन को संगे इंटीग्रेट करियो पड़ियो सो दैट आवर लिवेबिलिटी इंडेक्स विल बी वेरी हाई सर बहुत जगह देखा जाए फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स पीपीपी इज सक्सेसफुल public private participations even if not only in housing infrastructure sector but government is so that private participations with the private stakeholder they can apply their mind and all that and guide the government so that and jointly they can apply their intelligence to absolutely because since everyone has an interest तो सेठी what do you feel जेतेबेले हमर एटा गोटे दरकार अछि गवर्नमेंट पे जदि प्राइवेट पार्टीज आर अवेलेबल टू शेक हैंड is there any model available or government or intent available for this kind of thing because we want a faster growth we want to see North Bhubaneswar a growth story within 10 years what could be our vision 10 वर्ष भीतर नॉर्थ भुवनेश्वर को हमें केमते देखियो को चाहिबो एवं we want a faster vision we want a intent we want a strong governance policies participations ताकू नहीं करी हमें केमिति देखियो को चाहिबो माने भाबी नियो तो बनो दिस इज अ डिस्कशन एंड ऑल दैट इट्स नथिंग टू बी काली हबो न हबो दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स नो वी आर डिबेटिंग एंड आई कंप्लीटली एक्नॉलेज गवर्नमेंट रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि गवर्नमेंट रो रोल खाली सीडीपी करी की ताकू पेपर रखिया न सीडीपी के रखी करी जेति की इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य एमिनिटीज प्लान रे अछि ताकू केमती फ्रूशन को आनिबा केमती तैयारी करबा गवर्नमेंट रो रेस्पोंसिबिलिटी एवं गवर्नमेंट एलोन कैनॉट इम्प्लीमेंट दोज इंफ्रास्ट्रक्चर्स आजकली देर आर मेनी मॉडल्स इन थ्रूआउट द वर्ल्ड in fact why take examples from India only right take examples from all over the world right there are many examples
आई नो कोरिया रे सोल रे गोटे एरिया रे से माने हाईवे को भांगी की सेठी 8 किलोमीटर रो गोटे पब्लिक माने रिक्रिएशनल एरिया करदेले गुड़ाए जगार से माने वर्तमान जेहेतु पॉपुलेशन स्टेबिलाइज करगलानी गुड़ाए डेवलप कंट्रीज रे हाईवेज एंड फ्लाईओवर भांगी करी सिटी मान भितर से माने वॉकिंग स्पेस पेडेस्ट्रियनाइजेशन करचंती एवं ब्यूटीफुल नुआ रिटेल स्पेस कमर्शियल एरियाज डेवलप करचंती रिक्रिएशनल एरिया डेवलप करचंती भुवनेश्वर रे मध्य मु एज आई मेंशन ब्यूटीफुल एरिया सब अच्छी आम जदि प्लान करवा कमर्शियल एरिया गोटे एरिया कर परिवा रेसिडेंशियल एरिया पाखरे कर परिवा सो दैट हमको कार जर्नी बहुत दूर जीवा दरकार पड़ो ना रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल शुड बी डिसएग्रीगेटेड एवं प्लान्ड इन ए वे दैट लोक मान को बहुत बेसी ट्रांसपोर्टेशन यूज करिया को पड़ो ना कार यूज करिया वेरी पॉपुलस कंट्री एवं जो जगह पॉसिबल प्राइवेट सेक्टर एनर्जी एंड डायनामिज्म को आनिबा दरकार प्राइवेट सेक्टर को दरकार लिटिल बिट ऑफ रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टमेंट दैट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड एवं जदि प्राइवेट सेक्टर रहिबो योर अपकीपमेंट योर मैनेजमेंट योर मेंटेनेंस विल बी मच बेटर स्टेट गवर्नमेंट एवं पीएसयूज रे हमर आईन कानून बहुत सेथिरे ऑडिट मध्य अछि तेणु फ्लेक्सिबिलिटी नाही सब गोटे टेंडर करा जिवा दरकार L1 को दरकार किंतु प्राइवेट सेक्टर रे नाउ आई मीन प्राइवेट सेक्टर आई कैन सी द फ्लेक्सिबिलिटी ओके प्राइवेट सेक्टर रो डायनामिज्म को हार्नेस करिया पई हमकु से भलिया क्लाइमेट मध्य क्रिएट करिया पड़ियो वी हैव टू ट्रस्ट प्राइवेट सेक्टर राइट सर हमर जेमती ASI व्हिच इज ए वेरी कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकली वर्तमान पब्लिक मॉन्यूमेंट मान को प्राइवेट सेक्टर को दौचंती जानि थिबो रेड फोर्ट इज मैनेज बाय डालमियास राइट हाँ सेमती प्राइवेट सेक्टर को जदि न आनिबा आमर पब्लिक प्लेस रो मेंटेनेंस जमती आमे गोटे पार्क करूचे से पार्कटा जदि गवर्नमेंट रो म्युनिसिपालिटी करिवो एवं गोटे स्मार्ट कॉर्पोरेट करिवो ता भीतर डिफरेंस निश्चय हो मेंटेनेंस मध्ये भलो हो ताको किछि अपॉर्चुनिटीज दबा किछि रेवेन्यू सी करिवो सो दैट इट इज नॉट ए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन फॉर हिम राइट हाँ so in many things private sector can be brought and I completely support this idea sir the one thing for North Bhubaneswar gote because city land parcels are available because city further development ame jo discussions kale ki gote mid development affordable sector development is available challenges we all know but ta bhitere jodi kichi jagah re government ro support ta milibo like गोटे जो सब बळे आमे गोटे जायकर देखाई छै गोटे इंडस्ट्रियल मान्यता मिलिले गोटे लैंड प्राइस टा ऊपर गोटे सब्सिडाइजेशंस मिलियो नंबर 1 नंबर 2 सेठी जति जेमति गवर्नमेंट लैंड पुलिंग करूची सपोज सेठी गवर्नमेंट एकला करूची लैंड पुलिंग करूचंती आजि पाइकरापुर एंड ऑल दैट सेठी गोटे दैट्स अ गुड मॉडल एज यू सजेस्टेड इन नॉर्थ भुवनेश्वर विथ पीपीपी मॉडल माने हमर प्राइवेट बिल्डर्स गवर्नमेंट सांगे मिसिकरी सपोज गोटे 100 एकड़ पैच को आइडेंटिफाई करिकरी आमे सपोज टेके दूर रे बिकॉज़ लैंड पार्सल इज अवेलेबल एंड सब्सिक्वेंटली इंपैक्ट विल बी एडेड टू नॉर्थ भुवनेश्वर कैन इट बी आपण गोटे वाइडर ये रे ए टाइप रो गोटे योजनाटा देखि परछन जो थरे कि माने यार इंपैक्ट भी आस परिबो प्राइवेट सेक्टर भी एंगेज हे परिबे गोटे पॉलिसी मेकिंग रे गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करि परिबे एंड अफोर्डेबल हाउसिंग रो जो गैप टा अछि सेटा भी मिटिगेट हे परिबो से आमर इंडस्ट्रियल लैंड रो दायित्व इडको अच्छी सर इट्स नॉट ओनली इंडस्ट्रियल बहुत प्राइवेट लैंड अछि जोटा हां सर सपोजिंग इडको मोड कंक्रीट एग्जांपल राइट गोटे आपण दउछन इडको इज नॉट ओनली इन चार्ज ऑफ फॉर इंडस्ट्री राइट इडको इज आल्सो इन चार्ज ऑफ many sectors which are categorized as industry right sir some housing which is supportive of industry some commercial establishment which can be considered as industry even hotels are considered industry सेमती गोटे planned park भी आस परियो right sir so advantage of planned हला सेतरे आपण तमरो road drainage sewage underground electricity supply is inbuilt ये जो chaotic हे जाउची जेतोले हम परे प्लान करूचु राइट सर सेटा हम कंप्लीटली अवॉइड करि परिबा हां अनफॉर्चूनेटली कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर इवेंट डेवलपमेंट रे कोन होची अनलेस इट इज ए गेटेड कम्युनिटी सेत्री आउ किछि फ्रीडम फॉर ऑल हे जाउची एनआरकी हे जाउची हां
ତେଣୁ I think a state driven development in which residential, commercial, industrial ସବୁ ମିଶିକି ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇପାରିବ what you are saying would be much better ଯୋଉଠି ଯଦି free land available ଅଛି ଏବେ ବି सर नॉर्थ भुवनेश्वर तो लैंड अवेलेबिलिटी एक्वायर କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା some other मेकानिज्म एंड ऑल दैट develop କରିବାକୁ डेवलप भी हेई परिबो yes सर आजिका दिन रु 10 वर्ष भितरे नॉर्थ भुवनेश्वर आपण गोटे विजन्स विथ ऑल काइंड ऑफ नॉट डेंसिटी गवर्नमेंट रो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जहां अवेलेबल जो पेस रे गवर्नमेंट चलची ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सुनो ये सब नहीं करी गोटे जस्ट विजन फॉर 10 इयर्स आजिका दिन टू 10 इयर्स विजन फॉर नॉर्थ भुवनेश्वर see 10 years is a very short time देखु देखु आम तो बहुत दिन भुवनेश्वर को देखुचु एवं भुवनेश्वर is changing very fast but unless you provide for it there is a limit to which Bhubaneswar can go so as I mentioned earlier Bhubaneswar as a excellent tier 2 city has to meet the road network inadequate road network challenge एवं public transportation challenge head on जदि आम यहाँ दुईटा करिपरिबा एवं नॉर्थ भुवनेश्वर मीनिंग पटिया एंड टू त्रिशूलिया एवं त्रिशूलिया रिवर फ्रंट एरिया गोटे प्लान करिपरिबा ताले इट विल बी ए नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट ऑफ भुवनेश्वर भुवनेश्वर रे जो हेरिटेज सिटी व्हिच वी हैव एंड आम जो सरकारी सिटी जो एटा प्लस ये जो आम सम प्राइवेट सेटलमेंट शहीद नगर है खारवेल नगर है यार ये माने जदियो रेसिडेंशियल हिसाब रे हेइथिला एट सम पॉइंट इन टाइम एबे सेमी कमर्शियल हे गलानी जो माने रोड पाखरे अछंती तो कमर्शियल हे गलानी तेणु तार किसी गोटे रेसिडेंशियल इंटीग्रिटी नहीं है आमे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न टाउन प्लानिंग व्हिच इज ब्यूटीफुल इन यूरोपियन सिटीज सेम कलर रो सेम हाइट रो yes area सब अच्छी it's so beautiful because they are of the same color same architectural design same facade plantation माने मध्य intelligently ହେଇची so that they the flower in one particular season लोक माने काई जापान को जाउचंती साकुरा फेस्टिवल देखिया पई चेरी ब्लॉसम से गोटे पर्टिकुलर एरिया रे एंटायर एरिया रे चेरी ब्लॉसम्स होची सिमती इट इज क्वाइट इजी टू डू दैट आमे हम गोल्फ प्रोसेस है करिछु अच्छा आमे गोटे रो रे गोटे प्रकार फूल जो हम लगेचु तो गोटे पर्टिकुलर टाइम रे से फूल हेले सुंदर देखा जीवो राइट तो माय विजन ऑफ नॉर्थ भुवनेश्वर इज सिंस देयर इज स्टिल टाइम रोड नेटवर्क एक्सपेंशन Right, public transportation improvement strict enforcement of zoning राइट सर and integrate the green areas into the city राइट सर and absolutely protect and sustain them not at all harm them Bharatpur and Chandka must stay there is Bharatpur Bartaman is सबु साइड रु ता उपरे मारा होची रेसिडेंट एवं जो अपार्टमेंट माने बा जो स्लम डेवलप करी जाइछि भरतपुर सेंचुरी जो हाथी अछंती लड़ हरिण अछंती बारहा अछंती इमेजिन गोटे एनक्रोचमेंट रु सेठी 24/7 लाउड स्पीकर सेठी बाजुची सेठी the wildlife is definitely disturbed. So in an intelligent city, we must take into consideration the environment, habitat. My vision would be good world-class town planning norm complete adherence. So the architecture is soothing and bit of a vernacular Orisan architecture integration, use of bare laterite, not polishing and coloring them. बर्तमान जदि गोटे हाइट रु भुवनेश्वर को देखा जीवो से जो नुआ सब छोट छोट टाउन डेवलप करुची जो कॉलोनी डेवलप करुची इट इज कंप्लीटली chaotic मो मोर घरु 20th फ्लोर देखुची तळकू I can see 100 different colors of buildings all around. It is very, very disturbing visually. But if you see a small European city, it's so beautiful because it is so soothing architecture, soothing same color scheme, same traffic. So we should integrate all these things and strictly enforce this. सर बहुत खुशी लगिला आपनकर जो अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आइडिया विजन्स आपन एज ए पॉलिसी मेकर्स देन आपनकर ड्यूरिंग योर ITCO presence and your planning for North Bhubaneswar. So then
your suggestions for North Bhubaneswar, your 10 years vision for North Bhubaneswar, बहुत बढ़िया लगेला अपन संगे discussions करी for contributions for your the kind of idea contribution for North Bhubaneswar, rise of North Bhubaneswar जो vision ए जो आमे जोटा करबा को जाउछु, it's just not a podcast, it is a movement. And এই জিনিসটা যেটা আমি করিବାକୁ যাଉଛୁ, it's a movement. What is your opinion? It's a good movement, sir. It's a good initiative, sir. It is a good effort, and especially I must acknowledge your role. Sir, You have been in this when you came into this profession. It was very unconventional, right, sir. and you have continued in this. Right, sir. So today you are one of the encyclopedia Sir, of thank you, sir. Bhubaneswar raw residential commercial development, Sir, and you have played your own role in modernizing this sector, right, sir. in this profession also. Right, sir. So I am sure a lot of people are following your footsteps. Right, sir. You know, without people like you, real estate business also cannot develop. Right, sir. Thank you. Builders and developers requires partners like you. So Bhubaneswar as a city can only develop if there is a healthy collaboration between policy planners in government and important civil activists, civil society activists, because there has to be constantly churning of ideas. Right, sir. गोटे आइवरी टावर रे प्लान करी हेबनी आमर नदी नाल रोड लैंडस्केप गछ पत्र जते फ्लोरा एंड फौना विषय रे आमर लोकल सोसाइटी लोक बेसी जानी जड़े बीएमसी कमिश्नर है कि गोटे वीडीए वाइस चेयरमैन है फॉर 2 or 3 years. His knowledge cannot extend to something which happened here 40 years ago. जो Right, sir. पटिया रे जो टाइप रो फ्लोरा एंड फौना थिले थिला Right, sir. रघुनाथपुर रे जहाँ थिला कि चंदका रे जहाँ थिला Right, sir. ये नॉलेज टा केमती भी पाइबे तेणु देयर इज टू वेरी एक्टिव कोलैबोरेशन. Active collaboration. Government policy makers cannot should not isolate themselves. Right, My sir. advice to our young officers is that actively collaborate with the societal players. Sir, sir. Don't think that they are alien, they are outsiders. Right, sir. Sir, thank you very much. And आपन संगे जो time टा जोटा कटले, and I feel elevated now. The vision, the idea, rise of North Bhubaneswar. So now after discussing with you, I feel this is the beginning. My idea, because rise of North Bhubaneswar, this is just started, and I mean end is limitless. Because after discussing with you, I feel very, very thrilled and Thank you. privileged. Thank you for very having much, me. sir. Having me. Thank you so much.